तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम जस्ट वहाँ जहाँ लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टॉप, आई थिंक आई हैव completed the formatting in print statement. We have used three methods for formatting. The first method was printf, and the second method was print format, and the third method was string modulo operator. Okay, so now the first method sounds like a kind of cool kid way, where we just use f before the string, and the second method is like kind of old school but still works, the format wala method. And the third method is boomer but still exists. Okay, it is old. Okay, it is old uncle, we can say, in the formatting world of print statement. ठीक है, वो हम तीन हमने पढ़ लिया अभी. Let's see some what we can say more about it, how we can use it, how. अब तुम सोचोगे ये तीन तो पढ़ लिए भाई, but तीन अलग क्यों पढ़े भाई, एक से भी तो काम बन सकता है. यस, it can, we can work with one, but it's depends on the application where we are using it. Okay, अगर हम अलग loops में use करते हैं तो f मतलब format type use होता है, या based on the application और based on our objective of the coding. Okay, उस पर depend करता है कि हम कौन सा formatting use करते हैं. So let's say some of the example जहाँ पे हम तीनों type के formatting देखेंगे and कौन सा handful आ रहा है वो देखेंगे. So I have taken the world famous value pi 22 by 7. Okay, so now I'm printing this value of pi using this three different types of print formatting. The first one is f print. तो ये तो पढ़ ही लिया हमने कि f print से क्या होता है. हम पहले f देते हैं स्ट्रिंग के शुरुआत में, एंड जो भी वेरिएबल होता है उसको कर्ली ब्रेसेस में बंद कर देते हैं. यहाँ पे वेरिएबल पाई है, सो इट विल, यहाँ पाई की वैल्यू में उसकी इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, पाई वेरिएबल जहाँ पे पाई लिखा है ऑब्वियसली. सेकंड मेथड फॉर्मेट मेथड, तो हम स्ट्रिंग लेते हैं, अंदर कर्ली ब्रेसेस में कोई जिस फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो हम नंबरिंग करते हैं, बेस्ड ऑन दैट डॉट फॉर्मेट में हम यहाँ पे पाई लिखते हैं, जो कि जीरो के जहाँ पे जीरो है वहाँ पे प्रिंट होगा. ओके, कर्ली ब्रेसेस की जगह. अगर मैं यहाँ पे कुछ कॉमा देके कुछ अलग और कुछ लिखता तो या और कुछ प्रिंट होता. मतलब आई वांट टू से दैट इफ आई गिव हियर कॉमा, लेट्स से, और आई गिव सम अदर वेरिएबल लाइक ए, तो मुझे यहाँ पे वन लिखना पड़ता कर्ली ब्रेसेस में, तो वन की जगह ए प्रिंट होता. ओके, सो दैट व्हाट आई वांट टू कन्वे यू. ठीक है. The last method is string modulo operator, which is used in C language, which is used to use that now we are using it in Python also, because we know old is gold. But yeah, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ पाई परसेंट एफ यूज कर रहे हैं हम. लास्ट टाइम हम परसेंट डी यूज कर रहे थे. द रीजन बिहाइंड दैट पाई, अभी ये फ्रैक्शनल वैल्यू कंटेन करेगा पाई वेरिएबल, सो वी हैव टू कैन से परसेंट एफ डिनोट फ्लोट नंबर और फ्लोट डेटा टाइप. सो हमारा पाई वैल्यू अभी फ्लोट डेटा टाइप है, सो वो डेसिमल में आएगा. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग परसेंट एफ हियर. ओके, इन ब्रैकेट में पाई वेरिएबल. So I will print this out. Okay, wait, something went wrong, I think. Yeah, I minute. And now it's fine. Now, wait a minute. This is not needed. हाँ. So now you can see that ये दो तो पूरा पूरा पाई की वैल्यू इतना बड़ा डेसिमल में प्रिंट कर रहे हैं, बट वी हैव this what we can say string module operator सिर्फ इतने डिजिट्स डेसिमल के बाद प्रिंट कर रहा है. This is because it is the old way of writing, and there are some limitations of old people. Okay, okay, no old people hurt in this video, but there are some limitations about that. So yeah. So next thing, what I will do, if अब तुम किसी कैफे में गए, समझो मैकडी में गए, तुमको बिल आया 399.99999999997 समथिंग, तो तुम तो उसको वही बोलोगे ना, मैंने देखो भाई मेरे को तो राउंड ऑफ करके दे, पॉइंट टू डेसिमल तक दे दे. मेरे को भी इतना नंबर देख के मेरी फट गई, और मुझे इसको राउंड ऑफ करना है. सो आई विल डू वन थिंग, आई विल राउंड ऑफ दिस थिंग. I will do this one thing here. Okay, I will just write code first, then I will explain you. Nothing I'm doing special here. Okay, let's see magic. तीनों ने अप टू 2 डिजिट तक प्रिंट किया. यहाँ पे किया क्या है, वी हैव यूज्ड हियर फॉर्मेट स्पेसिफायर, और वी कैन से या वी कैन से इट एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर. तो हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई किया प्रिंटिंग स्टेटमेंट का. हमने क्या बोला, तुम प्रिंट करो, पाई प्रिंट करो, पर कब तक, टू एफ तक. टू यहाँ पे करता है कि डेसिमल के बाद कितने इंटीजर होने चाहिए, और एफ यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि वो फ्लोटिंग है, मतलब फ्लोट. ऑब्वियसली वी आर यूजिंग एफ, फ्लोट डेटा टाइप, दैट्स एफ. ठीक है. मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ. मैं सपोज यहाँ पे 3 लिखता हूँ, यहाँ पे 4 लिखता हूँ, और वहाँ पे 2 ही रखता हूँ. So we can say यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स प्रिंट हुए, यहाँ पे डेसिमल के बाद 4, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2, as I have specified to the print स्टेटमेंट. ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर.
कैसे कर लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर कोलन डॉट whatever how much spaces we have to give after the decimal point, that is 3 4, and what is the type of data, that is float, so f. ठीक है, clear है. Next, you have seen this in the first classes that we used to write some, what we can say, for the design, or we can say the aesthetic look, we used to print like this, uh, 1111. Okay, and this is just when I just remember that when I just started, no, the teaching to the print statement in my second or third video, I use this example. Okay, just to explain how print works. But अभी ना मुझे ये लेफ्ट अलाइन है. Okay, बट आई वांट इट टू बी राइट अलाइन, क्योंकि मुझे को अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा स्टैटिक चाहिए, तो मुझे राइट अलाइन चाहिए. सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगेन आई एम यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर 5D. यहाँ पे टोटल 5 डिजिट्स है ना मैक्सिमम, यहाँ पे 5D यूज कर रहा हूँ. हाँ, सो व्हाट हैपनिंग हियर इज कि मैं 5D यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. तो यहाँ पे जो 5 डिनोट कर रहा है वो कर रहा है कि वी वांट टू यूज मिनिमम 5 कैरेक्टर्स इन एवरी प्रिंट स्टेटमेंट. मतलब यहाँ पे वो प्रिंट 1 ही करेगा क्योंकि मैंने V1 दिया है, बट मैं प्रिंट को बता रहा हूँ कि मुझे मिनिमम 5 कैरेक्टर प्रिंट ही करते हैं, पहले मैं तुझे 1 दे रहा हूँ. ओके, दैट्स व्हाट इट मीन्स. और यहाँ पे 5 डिनोट कर रहा है कि 5 मिनिमम कैरेक्टर प्रिंट होंगे नो मैटर व्हाट. वो डी एक्सपेंड कर रहा है डेटा टाइप ऑफ कौन सा, इंटीजर टाइप ऑफ डेटा प्रिंट हो रहा है, इसलिए डी यूज कर रहा है. एफ होता तो फ्लोट होता है. ठीक है, तो अभी राइट अलाइन हो जाएंगे इससे. वो क्या रहा है, मैंने 1 प्रिंट किया, उसने 1 तो किया, बट उसको बोला कि मिनिमम मुझे 5 प्रिंट चाहिए चाहिए. वहाँ पे उसने 4 जो है वो पहले ब्लैंक छोड़ दिए. बोला मेरे को तो 4 दिए नहीं है, बट मेरे मास्टर ने कहा है कि मेरे को 5 चाहिए, मतलब चाहिए, तो मैं उसने 4 ब्लैंक छोड़ दिए. ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन. दैट्स व्हाट इट वाज अ शॉर्ट वीडियो. ओके, थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग. ओके, बाय बाय.